টেলিসাইকিয়াট্রি বা টেলিচিকিৎসার পদ্ধতি শুরু করেন। সো দ্যাট ইজ এ ডেভেলপমেন্ট। না, 2 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে যে এই যে ধরুন যেটা আপনি বললেন, আজকে আমাদের এখানে দেখছি আমরা মনোবিদ চিকিৎসকদের সংখ্যাটা অনেক কম, মানে প্রচুর বাচ্চাদেরকে বলা হয় কাউন্সিলিং করানোর জন্য। হ্যাঁ, মানে ভীষণ কষ্টকর ছিল। তার কারণ হচ্ছে বাচ্চারা একটা বুঝতে পারছে আনসার্টেনিটি তার বাবা মার মধ্যে আছে, সুতরাং সেটা তারা ফিল করছে। এবং বাচ্চাদের ওই সময় ঘরে বন্ধ থাকাটা এক, আর স্পেশালি যাদের প্রি এক্সিস্টিং মেন্টাল ইলনেস ছিল, ধরুন এডিএইচডি যাদের ছিল, অটিজম ছিল, তাদের বিভিন্ন রকম থেরাপি বা কাউন্সিলিং চলতো, সেটা সাডেনলি বন্ধ হয়ে গেছে। अच्छा, प्रेसिडेंट साहब को अभी 5 बजे की लेक्चर है, कोई सवाल इनके लिए है तो पहले पूछ लें। I have a question for you, sir. Yes, sir. You said that depression is going to be the biggest number of OD of your doctors. So it will grow by 2030. You have told. So what are the root causes of it? Can we do some preventive measures so that it will not reach that pandemic situation? There are financial, personal, family stresses, job, poverty. These are all sociological problems. But there is also one very important factor, what we call it genetics. Because most of the mental illnesses, they run in families. So for that, for example, mental retardation, we advise people that they should not marry within the families because of the genetic loading. So that is, there are different causes for that. But the most important thing is that depression is treatable, is manageable. You must have seen the heart specialist, diabetes specialist. Now they have changed the trend. When the heart doctor gives prescription, he spends 2 minutes to write prescription, but he spends 5 minutes to tell the patient how to prevent heart attack. Diabetic specialist, he will only need few minutes to write the prescription, but he will try to tell the patient that, look, how can you prevent developing diabetes or complications of diabetes? I think for mental illnesses, it is even more important, because if we tell people that, look, don't suffer in silence. If you are having a problem, share it with your family members, with your friends, and get advice from that. So from that perspective, now this is another reason. We are entering into an age, usually people say that around 60 you will have one illness, around 70 you will have 2 illnesses, around 80 you will have 3 illnesses. Now there are many physical illnesses that actually lead to depression. Somebody suffering from cancer, somebody who is the only earning member, he gets a heart attack, depression is going to come. So this is another factor, that mental illnesses on their own and mental illnesses accompanying physical illnesses, those are increasing day by day. So that is the perspective that the projected figures are, that depression will be one of the highest medical problem in the coming years. आज का डेट में इतना मन का क्यों बीमार होता है? आज का डेट में मन का क्यों इतना बीमार होता है? আমি এটা পরে বলছি, স্যারকে যেতে হবে। आपने जैसे बताया, बहुत सारी चीजें बताई, ये उसकी वजह ये है कि ये वो डिप्रेशन है जिसको हम कहते हैं कि ये अंदर से आती है। इसकी रीज़न जेनेटिक्स है, इसकी रीज़न केमिकल्स है। कि केमिकल की, जिस तरह डॉक्टर प्रसाद साहब ने कहा था कि वो हार्मोन्स की कुछ कमी आ जाती है, वो क्यों आती है इसका किसी को कारण का पता नहीं। बट देयर इज 2 types of depression. One is which is associated with stresses. The other one is that you don't find any stress, but this is what we call endogenous depression, जो अंदर से आ रही है। There genetics, hormonal problems, chemicals, these are there. सर डिप्रेशन की प्राथमिक चिकित्सा एक बार में नहीं आता सर, वो रुक धीरे धीरे बढ़ता है सर। Depression, which is recurring, which gets better but then can come better. So here the preventive role becomes even more important.
one more thing which we must keep in mind, depression in our culture is used very commonly. You wake up in the morning, you listen to the news, and you go to your office, you say, oh look, I'm very depressed today. डिप्रेशन की जो चिकित्सा है सर But so so this is what I'm saying is that depression is sometimes used as to express your emotions. That depression doesn't need treatment. Depression, when it becomes persistent, sadness of mood affects your day-to-day work, your family life, your functioning, then that depression or sadness goes to the level where it needs to. सर इसमें नहीं, चिड़चिड़ा सब कुछ तो है लेकिन मन में कोई नेगेटिविटी आता है कोशिश Yeah, yes, irritability. चिड़चिड़ापन भी है सर इसमें And irritability, then guilt feelings. Yes. That Guilty. why I am having this one. So all these are vicious cycle. I mean, depression, what we teach our students, depression is a disorder of losses. मर्डर Sir, what is the clarification of building treatment gap? Sorry, Building treatment by your theme. bridging. माने जो ट्रीटमेंट देर से आ रहे हैं ना, देर से लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो गैप को हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो बोला ना जो बोला जो ट्रीटमेंट गैप है 85%, that means only 15% of the people getting proper treatment. देखिए breathing treatment gap होगा. So bridging. Bridging the gap. So this gap we want to reduce it. Cannot we make it 100%? There are not 26 different countries, 24 countries. सर आपने कहा 20,000 पेशेंट में 2,000 पेशेंट में एक डॉक्टर है अभी, लेकिन हमारे पास अभी 1,000 10,000 में एक डॉक्टर है। सर तो उसको कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, उसके लिए क्या ऑप्शन है सर अभी? मैं आपको यहाँ रोकना चाहता हूँ। रामचंद्र जी है उस अवतार है जो मानव की अवतार है। रामायण में आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। दशरथ महाराज को डिप्रेशन हुआ, वो भी सुसाइड में मर गए। रामचंद्र जी को भी 2 बार डिप्रेशन दिखाया गया है रामायण में, लक्ष्मण जी को भी दिखाया गया है। वो तो मानव रूप है, इसलिए तो मानव जैसे तुमको मेरे को उसको होते बताया। पर वो पुरुषोत्तम जी है, पर उन्होंने तो सोल्यूशन अलग बात है। पर एक कलयुग है, कलयुग में तो बहुत सारी। आपके सवाल में एक ही बोलना चाहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जो भी रिलीजन की बीमारी तो चली जाती है। दादा इस साइड पर देखिए डॉक्टर उतर इस साइड देखिए रखो एक तो इधर इधर थोड़ा इधर दादा आप इधर देखिए इस तरफ देखिए First left. উইথ স্মাইল এবার যার যার ইন্টারভিউ করার এখানে চলে আসবেন